On March 6, when the farmers' movement enters its 100th day, in the scorching heat of 31 degrees centigrade, the protesting Indian farmers will boldly intensify the second round of their protest with Maha Panchayats. This is Singhu border, one of the 5 protesting sites of farmers at the border of the national capital. The farmers have seen the winters change into summer here, and yet they are playful and spirited. The movement, however, has become bigger now. It's moved from these encampments to Maha Panchayats. MSP Dilao. From March 5th, farmers of Karnataka have joined the protest, asking Prime Minister Modi to ensure MSP for crops. कल होगी है, शुरुआत हो जाएगी कल से, और रागी की पहली फसल आ गई है एमएसपी की। अब उसका रेट देखते हैं कि बाजार में क्या है, और जहां पे किसान बेचने जाएगा उसके कम पे किसान नहीं बेचेगा, और कल ही पता चल जाएगा। भारत सरकार का जो ये कह रहे कि एमएसपी है और रहेगी और एमएसपी पर खरीद हो रही है, तो कल पता चल जाएगा। उसके बाद में चने वाली आ रही है, मसूर की आ रही है, गेहूं की आ रही है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, और यहाँ ये यूपी तक, राजस्थान तक, ये सारी चीजें आ जाएंगी 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने में बहुत सी फसलें एमएसपी की आ जाएगी। और एक नई मंडी जरूर खुलेगी देश में, वो है पार्लियामेंट में। किसान की फसल अगर कहीं नहीं बिक रही तो किसान अपना लेकर आ सकता है वहां पे, 10 क्विंटल ले आओ, उसको भी तजर्बा हो जाएगा कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और उन्होंने एक चीज और कही है कि फसल अपनी कहीं पे भी देश में ले जाकर बेच सकता है, तो किसान अपने ट्रैक्टर में ले आवे, अपनी गाड़ी में ले आवे, और पार्लियामेंट पे जरूर उसकी फसल बिक जाएगी। We saw farmers marching with tricolor flags on our Republic Day. It was an unprecedented tractor parade in the history of India. मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। People of Delhi welcomed the farmers with water, fruits and flowers. It seemed to be going well, but then an air of gloom pervaded the movement after a group of people entered the Red Fort on January 26th. The farmer leaders unanimously criticized flags being hoisted by this group at the Red Fort. They said this was done to undermine the intent of the farmers. ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੱਚਿਓ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 4 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ? 4 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? On the 28th of January, Uttar Pradesh government deployed at least 1,000 armed security forces personnel at the Ghazipur border. This included at least 3 companies of Central Armed Police Forces, 6 companies of Provincial Armed Constabulary and 1,000 police personnel. It seemed that the farmers at Ghazipur would back off. However, Chaudhry Rakesh Tiket refused to budge. He cried, he protested, he threatened to commit suicide. क्या बात है? बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान,
ये 5 लाख ट्रैक्टर भी है। Hundreds of tractors and trolleys packed with farmers reached Ghazipur border in a couple of hours that day. The Uttar Pradesh government ordered its forces to step back. Tikait, however, asserted that the farmers were bullied by a group of non-government forces as well. बीजेपी के लोग यहाँ पे मारपीट करने का काम कर रहे हैं। 2 विधायक जिन्होंने पब्लिक ने चुना जिनको, ये एक बड़ी षड्यंत्र हर धरने पे इस तरह की है। ये षड्यंत्र हो रहा था आपकी नजर में कि जो आंदोलन चल रहे हैं उसके खिलाफ? सब जगह यही था कि बीजेपी के लोग आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? हम यही रहेंगे। जो वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं वो चल चुके हैं आपके यहाँ गाजीपुर के लिए ना? आएंगे, चल चुके हैं, आएंगे। तो कल से कुछ और रूपरेखा तैयार होगी आंदोलन? बिल्कुल रूपरेखा तैयार करेंगे। There was no looking back after that. Since then, a series of Mahapanchayats has propelled the movement and its leaders forward. After the Kandela Mahapanchayat, Dr. Darshan Pal, president of the Krantikari Kisan Union, and Balbir Singh Rajewal of the Bharatiya Kisan Union, Rajewal, welcomed the Khaps into the farmers' movement. Khap is a cluster of villages united by caste and geography. In Khap Panchayats, the leadership is often chosen on the parameters of social status, stature, age, gender, financial power. Like Punjab, farmer unions in Haryana are hardly significant. Most farmers in Haryana actually trust their Khap Panchayats far more than any union. Darshan Pal and Rajewal have understood this. They have readily started participating in these panchayats. And on the other hand, Rakesh Tikait has understood the significance of women participation. Under the proposed escalation program, Mahapanchayats are being organized in UP, Uttarakhand, Haryana and Rajasthan. At a joint press conference by the SKM, Balbir Singh Rajewal said their teams will visit West Bengal, Kerala and other poll-bound states. Women have been an integral part of this movement. They have come from gurudwaras to make langars. They have come from women movements to give speeches and sing revolutionary songs. On the occasion of International Women's Day on March 8th, women protesters will lead the protests. There is a paradigm shift in Western Uttar Pradesh politics because of this movement. Farmers have transcended their communal beliefs for their land and harvest. Women from rural India have increasingly come out of their villages to be part of the movement. And farmer unions are marveling the power of panchayats. This is Rukmini Sen for National Herald, India.